So hi everyone, this is Kapil and this is day one of our Python workshop. And in this workshop, we will discuss Python from scratch to advanced till NumPy, Pandas and Matplotlib libraries. Right. This is the first day of our workshop. And before I start this workshop, who am I and why you should even listen to me? Guys, my name is Kapil. I am a data engineer in TCS. Since 3 years, I'm working in TCS. Apart from that, I'm also Microsoft certified Azure data scientist, and I'm having about 5 years plus experience in Python. This is about me, guys, and this is the overview of our session. This is the first session. So in this session, we will discuss basic syntax and data types, operators, control statements, and iteration while loops, for loop, and problem solving question. Some of the question we will do from HackerRank and some of the question we will do from HackerEarth. Right? You might be aware about these two website, HackerRank and HackerEarth. If you are not aware about, I will share you the link with you guys. Okay? So this is the overview of our session, and we have two rules for this session. The first rule is this: we will have a separate Q&A session at the end of the session. Means we will discuss these topics, and after these topics we will discuss and we will have a Q&A round. ठीक है, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो सब आप पूछ सकते हो उसमें. ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन. बीच में अगर Q&A करेंगे तो वो फ्लो टूट जाएगा. ठीक है, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तुम चैट में लिख सकते हो. ठीक है. सेकंड थिंग, मैं तुमको देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता, बट आई कैन सी योर चैट. ठीक है, तो चैट में जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर कुछ चीजें रिपीट करनी है, आवाज क्लियर नहीं है, तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. ठीक है, ये दोनों रूल क्लियर है सभी को? पहला रूल और दूसरा रूल सबको क्लियर है हमारी हमारी इस चैट का? यू कैन टाइप यस, यू कैन टाइप CLR, यू कैन टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, राइट? ठीक है, तो इट शुड बी टू वे, राइट? ऐसा नहीं होगा कि बस मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप सब सुन रहे हो. ठीक है, तुम सब लोग भी बोलो साथ में. ठीक है, ओके. Okay, so we'll start. So before starting, right, one, I'm having 1 month of this workshop, right? Just give me a minute. Right, I'm having this sheet I have shared with you guys. ठीक है, ये मैंने ग्रुप के ऊपर शेयर करी थी, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ये वाली शीट. इसके अंदर 1 महीने की 21 डेज का जो पाइथन जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें है. कौन कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं हैकर रैंक के, वो सब है. कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं डे वाइज. लेट्स से डे 1 पे हम ये चीजें पढ़ेंगे, डे 2 पे हम ये चीजें पढ़ेंगे, डे 3 पे हम ये चीजें पढ़ेंगे. ऐसे सारे टॉपिक वाइज है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो होमवर्क तुमको इस वेबिनार से मिलेगा, ठीक है, वेबिनार के खत्म होने के बाद में तुम्हें 2 क्वेश्चंस होमवर्क में भी मिलेंगे. तो दीज क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन. ठीक है, तो ये वाली जो शीट है आपको चैट में मिल जाएगी. सबसे टॉप पे मैंने इसे पिन किया हुआ है. ठीक है, 1953 पे. ठीक है, 7:53 पे मैंने इस चैट में पिन किया हुआ है, तो यहाँ पे मिल जाएगी. ओके ओके, विल डिस्कस इन इंग्लिश. ओके, ठीक है, विल डिस्कस इन इंग्लिश. ओके ओके, सो विल डिस्कस दीज क्वेश्चन हैकर रैंक एंड क्वेश्चन ऑफ हैकर रैंक एंड हैकर. And this sheet, right, this 21 days Python challenge sheet, you will be getting in our chat box, right? In our chat box or in WhatsApp group. ये वाली शीट तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी. हम दोनों में देखेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी. ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम हिंदी में भी करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज इन आवर चैट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज टू. तो हम दोनों में कोशिश करेंगे. ठीक है, ओके. सो विल डिस्कस विद आवर फर्स्ट टॉपिक. We'll discuss with our first topic, that is basic syntax and data types of Python. ठीक है, तो the syntax of Python is very clear and very short, right? If I want to print something or if I want to take an input from the user, so the syntax is very simple. The syntax is like, if you want to print, then I just write print and I can print my name or anything I just want. Like, and to run this program, I can select shift enter or I can click on this button. So I can run this program. If you are not aware about the Google Colab, right? So here we will do our practice. तो साथ में तुम लोगों को भी करना है. हाँ, हिंदी इंग्लिश बोथ. ठीक है, तो साथ में तुम लोगों को भी करना है. ऐसा नहीं कि बस मैं केवल ही कोडिंग करूंगा, सब लोगों को साथ में कोडिंग करनी है. तो दिस इज द लिंक ऑफ गूगल कॉलैब.
So you can go on this link and you can create your profile on Google Colab so that you can do coding over here. ठीक है? You can create a new notebook with the help of file. Go to the file and create a new notebook. ठीक है? Create a new notebook in your drive. So it will be saved in your drive. You can share with your friend or you can invite your friend as a collaborator. ठीक है? जैसे हम पबजी खेलते हैं, 2-4 लोगों को बुला के साथ में, सेम हम कोडिंग भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुला के यहाँ पे शेयर करके उनके साथ में एक साथ हम 4 लोग 5 लोग एक साथ कोडिंग कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है? So this is the benefit of Google Colab. आप सब लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है, जितने भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू राइट दिस, यू जस्ट हैव टू राइट ओनली द कोडिंग पार्ट. ठीक है? You have to write only the coding part. So this is the simple syntax of Python. And if I want to take a data type, right, what are the data type of Python? So there are almost 5 data type in Python, right? A string, float, boolean, and integer. Okay, these are the 5 data type, but one more data type, that is complex. We will not learn complex because complex is not widely used. Widely used data types are these 4. ठीक है? Integer, float, boolean, and a string. These 4 are widely used. So we'll discuss with integer. So if I want to print or if I want to declare an integer, how can I declare? So I directly write a and give integer 1. It will take automatically, right? I don't have to give the type of this, right? What the type of this? I don't want to give the type of int or float or a string, right? Python will automatically recognize this. This is the string or this is the number. ठीक है? तो ये एक इंटीजर है, तो पाइथन अपने आप इसको समझ लेगा कि हाँ, दिस इज द इंटीजर. इफ आई वांट टू डिक्लेयर अ फ्लोट वैल्यू, देन b इक्वल्स टू 12.2. दिस इज द फ्लोट वैल्यू. इफ आई वांट टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वैल्यू, then I can declare a string value, my name Kapil, and this is the string value. ठीक है? And one more, that is boolean. Boolean is a data type which helps in true or false value, which helps in discriminate true or false value, right? So if I want to declare one value d, that is the value of d is true, so I can write true, okay? Or I can write false also. So these are the 4 data types: integer, float, string, and boolean. If I want to print this, right, if I want to print the number a, then I can directly write print and a and shift enter. After that, I can print a. If I want to print the type of a, what is the type of a? Type of a is integer, so I can print with the type function. I can write type or I can print type of a, that is integer a, that is class of int. If I want to type of c, right, what is the type of c? C is of string type, so I can write c over here and I get this is the type of string. C is a type of string. ठीक है? This couple I can comment that, so interpreter will not read that. Okay, so here the type of c is str. If I want to type, if I want to print the type of this d variable, then I can print like this, and this is the boolean value. This is the boolean value. Okay, इसमें कोई डाउट है? Integer, float, string. What about the complex? Complex is like कि ऐसा होता है complex. A equals to b plus c. A equals to bx plus c. So इसमें क्या होता है? इसमें इमेजिनरी वैल्यू होती है और एक इसके अंदर नॉर्मल वैल्यू होती है. बहुत वाइडली यूज नहीं होता. वाइडली जो यूज करते हैं वो हम इन्हीं चारों को यूज करते हैं, इसलिए मैं ये 4 बता रहा हूँ. ये तुम्हें कहीं पे तुमको कोई क्वेश्चन हैकर पे कहीं पे तुम्हें इसका क्वेश्चन नहीं मिलेगा. तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप लिख के बताओ तुम. इमेजिनरी वैल्यू जो हम 12th या फिर 11th में पढ़ते थे ना, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप c इक्वल्स टू b प्लस c और a इक्वल्स टू ax प्लस c. So this is the complex variable or complex value. We are not using that widely in Python. That's why we are just ignoring this, right? And we are focusing on these 4 data types. ठीक है? इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं है? नहीं, कॉम्प्लेक्स समझा ही नहीं रहा ना मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो ना.
मैं बता ही नहीं रहा, कॉम्प्लेक्स मैंने बताया ही नहीं। जो मैं बताऊंगा उसका क्वेश्चन पूछ लो तुम, ये मैंने बताया ही नहीं अभी। मैंने बोला ना इग्नोर करना है। ठीक है। ओके। ओके, विल स्टार्ट विथ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है? स्ट्रिंग, लेट्स चेक, लेट्स वी हैव S1 स्ट्रिंग, और इसके अंदर मेरे को हेलो लिखा हुआ है, लेट्स से। ठीक है। और मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि S2 है, ठीक है, जिसके अंदर कपल लिखा हुआ है। अब मैनिपुलेशन मीन्स कि एडिशन ऑफ स्ट्रिंग और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्ट्रिंग, और वी कैन प्रिंट स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, इफ आई वांट टू प्रिंट वन स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स, so how can I print? Or if I want to concatenate one or two string, like we have two string, that is string one that is hello and string two that is couple. If I want to concatenate, how can I concatenate? So I just write print and S1 plus S2. In this way I can concatenate the string. Okay. Okay, Shubham, we'll explain once again. ठीक है, if I want to print the summation of these two string, let's say I am having string S1 and I am having string S2, ठीक है, दो स्ट्रिंग है मेरे पास, इन दोनों को मेरे को कॉन्केटिनेट करके प्रिंट करना है। कॉन्केटिनेट मतलब कि प्लस करके प्रिंट करना है। तो वो कैसे करूंगा? मैं डायरेक्टली सम लगा दूंगा यहाँ पे प्लस का साइन, देन ये प्रिंट हो जाएगी सम होके। इफ आई वांट टू रिपीट समथिंग, लेट्स से कि मेरे को ये कपिल नाम लिखा हुआ है, इसको रिपीट करवाना है, लेट्स से मेरे को इसको 20 या फिर 10 टाइम प्रिंट करवाना है, तो हाउ आई कैन डू दैट? आई कैन डायरेक्टली राइट प्रिंट, और इसमें मैं S2 दे दूंगा और इंटू कर दूंगा इसको 10 से या फिर 20 से, जितने टाइम मेरे को प्रिंट करवाना है इसको। ठीक है, तो उतनी बार मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा, तो ये उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रीवियस वन। ओके, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले। ओके, सो हमारे पास फोर डेटा टाइप्स है बेसिकली। इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग और बूलियन है। चार डेटा टाइप्स है हमारे पाइथन में। सो इंटीजर्स जो होता है वो सिंपल नंबर होता है, A=1, ये नंबर है। बी, ये मेरा फ्लोट नंबर है 12.2, ये फ्लोट है। ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू मतलब पॉइंटिंग वैल्यू वाली। सी जो है ये मेरा स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को मैं स्ट्रिंग बोलता हूँ। ठीक है, तो कपल लिखा हुआ है तो दिस इज द स्ट्रिंग। और डी के अंदर ये जो डी है, ये मेरे एक बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू मतलब कि ट्रू, ये तो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, तो किसी चीज को फ्लैग करने के लिए यूज करता हूं मैं इसका। तो दिस इज माइट बी ट्रू, दिस माइट बी फॉल्स। ठीक है, अगर इसका मेरे को टाइप प्रिंट करना, लेट्स से कि ए का मेरे को टाइप प्रिंट करना, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, तो विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन आई कैन प्रिंट द टाइप ऑफ ए। ठीक है, ऐसे मैं प्रिंट कर सकता हूँ। इफ आई वांट टू प्रिंट द टाइप ऑफ सी, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ सी? ठीक है, तो ऐसे मैं टाइप ऑफ सी प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, str, इसका टाइप स्ट्रिंग है। मेरे को पाइथन में बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा फ्लोट है और कौन सा बुलियन है। इट विल ऑटोमेटिकली पिकअप। ठीक है, पाइथन का इंटरप्रेटर जो होता है वो ऑटोमेटिकली पिकअप करता है। ठीक है, ये क्लियर है? ओके। ओके, विल स्टार्ट विथ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हमने अभी देख लिया है कि हेलो प्लस कपल हमने प्रिंट करवा दिया। देन वी हैव प्रिंट कपल मेनी टाइम्स, लाइक 10 टाइम्स और 20 टाइम्स। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्लियर है? ओके, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग और वो सारी चीजें हम आने वाली क्लासेस में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे करनी है, अगर स्ट्रिंग्स में से अगर इतने पार्ट को निकालना है तो कैसे निकालना है, अगर स्ट्रिंग में से हमें इसको रिवर्स करना है तो वो कैसे करना है, विल डिस्कस इन 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 आवर अपकमिंग क्लासेस। ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हम पूरा देखने वाले हैं। ठीक है। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होने वाले हैं? जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते थे, सेम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, दैट इज प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। ठीक है, these four are the basic arithmetic operators, and with the help of these operator we will perform the operations on string, will perform the operation on list, will perform the operation on numbers। ठीक है, मेरे को दो नंबर को प्लस करना है तो विल टेक द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, मेरे को माइनस करना है, विल टेक द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है तो विल टेक द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, अगर मेरे को डिवीजन करना है तो विल टेक द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, स्लैश जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो दीज फोर आर द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, लेट्स से आई एम हैविंग नंबर ए, ठीक है, और इसकी वैल्यू 12 है, एंड आई एम हैविंग नंबर बी, इसकी वैल्यू मेरे पास 6 है। If I want to print the summation of A or B, let's say I want to print the summation, so how can I print A plus B? ठीक है, so in this way I can print the summation of A or B। ठीक है, so this will print the summation। if I want to subtract this, I can print A minus B। if I want a multiplication of this, ठीक है, the product of A and B, so I can find the product of A and B। if I want to print the division, so I can print like this division।
So the division might be, you might be curious about how the division is 2.0, because if we divide 12 by 6, if we do divide 12 by 6, then 6 1 is 6, 6 2 is 12. So the answer would be 2, and here the answer is 2.0. How it is possible? ठीक है, तो इसके लिए ना, अगर हमें फ्लोटिंग वैल्यू में आंसर चाहिए, ठीक है, इफ आई वांट द वैल्यू टू बी इन फ्लोटिंग वैल्यू, देन विल चेक विद सिंगल स्लैश. इफ आई वांट द वैल्यू इन इंटीजर वैल्यू, ठीक है, अगर मेरे को डिवाइड करने के बाद में इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो वो वहां पे मैं डबल स्लैश का यूज करूंगा. ठीक है, तो अब जब मैं इस 12 को 6 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास 2.0 नहीं आएगा, मेरे पास केवल 2 आएगा. ठीक है, केवल 2 आएगा. इसका मैं एक हैकर रैंक का क्वेश्चन भी करने वाले हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन है हैकर रैंक का, यहाँ पे मैंने इस शीट के अंदर इंक्लूड किया है, तो उस क्वेश्चन को भी हम करने वाले हैं सेम सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर. ठीक है, तो इसको याद रखना कि अगर जब हम सिंगल स्लैश लगाते हैं, तो विल गेट द आंसर इन फ्लोट. इफ वी यूज द डबल स्लैश, देन विल गेट द आंसर इन इंटीजर वैल्यू. ठीक है, ओके ओके ओके, ये क्लियर है? अर्थमेटिक ऑपरेटर सभी को क्लियर है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, सभी को क्लियर है? इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, वी कैन डिस्कस इन द Q&A सेशन. ठीक है, द कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन द Q&A राउंड. ठीक है, Q&A सेशन. ठीक है, okay, so we'll move forward to control flow, right? Control flow means if, elif or else, these flow we will discuss, right? So why we are using the control flow? To make the decision on two conditions. Like if we have the number a, like that value is 50, and if we have the number b and the value of this is 100. So if I want to check the a is bigger or b is bigger, ठीक है, a बड़ा है कि b बड़ा है, ठीक है, 50 is greater than 100 or 100 is greater than 50, like that. If I want to check the two condition, if I want to compare the two number, or if I want to compare the two condition or two plus conditions, like three condition or four condition, then we are using if or elif or else. ठीक है, these condition will use at the time when we have to check the conditions. ठीक है, अगर जैसे मेरे को एक नंबर है मेरे पास, लेट्स से आई एम हैविंग नंबर 100 एंड आई जस्ट वांट टू चेक इट इज ग्रेटर देन 50 और नॉट, इट इज ग्रेटर देन, if I am having a number 100 and it is greater than 10 or not, ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, if else का यूज करूंगा. लाइक if I am having a condition 1 or 2 or 3 condition, at that time if I want to compare that condition, we use if, elif or else. how I can use, मैं बताता हूँ कैसे यूज करते हैं इसको. ठीक है, सिंपल सा. लेट्स से आई एम हैविंग नंबर a, that is 50. ठीक है, and I want to print it is bigger than 100 or not. So I just write a sentence, if a is greater than 100, if it is, then print a is bigger. Like that. Else a is smaller. ठीक है, so if a is greater than 100, it will print this. If a is not greater than 100, it will jump to this condition. First it will check with this condition. Let's say a is 500 and 500 is bigger than 100. ठीक है, so first how the code will execute. The code will execute like this: a equals to 100, first line. Second line, if a is greater than 100, अगर मेरा ये a, अगर 500 अगर मेरा 100 से बड़ा है, then it will execute this condition. If it is not, then execute this condition. ठीक है, like this it will work. तो अभी जब मैं इसको चलाऊंगा, तो it will give a is bigger because 500 is bigger than 100. So it will execute this condition and ignore this condition. ठीक है, if a is, let's say a is 50, so this condition will fail, this condition would be false, so it will ignore this condition and execute this condition. ठीक है, let me run this. So a is smaller, a is 50 then a is smaller. ठीक है, so if else conditions, ये वाली condition सबको समझ में आई? ठीक है,
Okay. Module. Ha, Krishna. About module. This is in arithmetic operators, right? One more thing, right? Krishna is asking. In arithmetic operators, like we have one more operator, that is modulo. This modulo operator, when we use, when we want to find the remainder of something. Like if we have the number A is 12, if we have the number B is 6. Let's say I'm having number 12, I'm having one number is 6. And if I want to divide this, then 6 to the 12. And if I want to find the remainder of this, like if I'm having number 12 and if I'm having one number 6, then if I want to find the remainder in this, so 6 1 is 6, 6 to the 12, the remainder is 0. So if I want to find the remainder, at that time, this modulo sign is used, Krishna. Okay? At that time, this modulo sign is used. Let's say I'm having one number that is 13, and if I want to divide this number with 6, so 6 1 is 6, 6 2 is 12, and remainder is 1, because this is starting, the remainder is 1. So at that time, the remainder will be 1. ठीक है, let's check with the code. ठीक है, तो यहाँ पे if I print the modulo of a and b, then the modulo of a and b will be 0 because the remainder is 0 here. But if I change this to 13, then the remainder will be 1. So modulo sign will work like that. ठीक है, ठीक है, so this is the modulo operator. Hope this is clear, guys. Hope this is clear, Krishna. Okay, so we move to our topic, that is control flow, that is if else. ठीक है, so if we have number A that is 50 and number B that is 100, and if I want to print who is bigger, right, in that two numbers, then at that times I can use if, elif or else if. ठीक है, or if I want to print the even or odd number, the number is 0 or greater than 0 or positive, negative, or or neutral number. Let's say I am having one number which is positive, I am having a number which is negative, and I am having a number which is 0. So how can I make a program for this? How can I make a program for this? So that a program will give A is positive, or A is negative, or A is 0. How can I make the program with the help of this if else statement? तो वो मैं बताता हूँ कैसे करता हूँ. ठीक है, if I'm having a number A and we'll take the number input from the user, right? So if we write input directly, then it will take the input in a string, right? Because by default Python will take the input in a string. But if I want to take the input in integer, then I can directly write int and int input. Then A will store the value of integer, right? What the user will give. Okay, so let's say I will run this program and I can give 22, and 22 will store in A. Okay, so if I want to check the A number is positive or A number is negative or A number is 0, so how can I do that? So if A is greater than 0, then the number is positive. Okay, if A is greater than 0, then I can write the number is positive. Number is positive. Okay, elif when we have 2 plus more than 2 conditions. Let's say I am having 3 conditions. If the number is positive, the number is positive or negative or 0. So we have 3 conditions: positive, negative, 0. So we will use if, elif and else. Okay, we'll use 3 conditions over here. So first condition is if number A is greater than 0, then number is positive. Okay, if A is less than 0, okay, if A is less than 0, then the number is negative. Okay. If and else at the end, if the number is positive, if the number is negative, or if the number is not negative or not positive, then the number will be 0. अगर एक नंबर पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है तो नंबर 0 है. ठीक है, तो फर्स्ट विल चेक दिस कंडीशन. इफ A is greater than 0, then it will print positive number. If A is less than 0, then it will print negative number. Is elif, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, if this condition is false, this condition is false, then it will execute this condition and it will print the number is 0.
लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ और इसमें अगर मैंने 100 दिया, लेट्स से आई गिवन 100 ओवर हियर, सो नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ आई विल गिव -10, so the number is negative because check this program check this condition and this condition will fail, then program execute this condition and this condition is true, so it will print number is negative. ठीक है, if the number is 0, let's say if the user gives the 0 number, so number is 0, so it will check this condition would be false because 0 is not greater than 0, then it will check this condition, 0 is not less than 0, then it will give to this condition and the number is 0. ठीक है, hope this program is clear, guys. If you have any doubt, any question, any query regarding this program, you can type in the chat box, right? We'll discuss. Okay? Regarding this if else conditions. The number is positive, negative, or 0. ठीक है? ठीक है. We'll start with loop, guys. ठीक है? What is loop and how we will use the loop. ठीक है? If else condition सभी को clear होंगे. If it is clear, type yes, type CR in the chat box. If it is not clear, you can type your question. ठीक है? If you have any doubt regarding if else condition, if condition, or else condition, or elif condition, ठीक है? If you have any doubt, you can type in the chat box. If this is clear, you can type CLR in the chat box. ठीक है? Okay. Okay, we'll move forward to loop, guys. What is loop and how we use the loop in programming? ठीक है? तो loop क्या होता है? If I want to execute the block of code, if I am having this block of code, if I am having this block, ठीक है, and if I want to execute this block again and again, right, if I want to execute this block of code 100 times or 10 times or 20 times, so at that time I use loop. ठीक है, if I want to repeat something, ठीक है, or execute the same amount of code again and again, at that time I can use loop. ठीक, सेम चीज को मेरे को बार बार प्रिंट करने के लिए I can use loop. So how it is using, ठीक है, I'm having two loop, guys, while loop and for loop. ठीक है, one loop is while loop and one loop is for loop. Both will use widely. ठीक है, but most of the time we'll use for loop or we can use while loop as per our convenience. ठीक है, so how this while loop or for loop will work? Let me give you the introduction about this. ठीक है, so while loop will work, right, when the condition is true. ठीक है, तो जब कोई सी कंडीशन इज ट्रू होगी तो while loop काम करेगा. If the condition is false, if the condition is true, then while loop will work. ठीक है, if the condition is false, तो while loop काम नहीं करेगा, while loop will fail. ठीक है, और while loop will break. ठीक है, कहां पे ब्रेक होगा? जब कंडीशन फॉल्स होगी. कंडीशन ट्रू होगी तो while loop will execute. कंडीशन अगर ट्रू होगी तो while loop चलता रहेगा, काम करता रहेगा. ठीक है, let's say I want to print something 5 times, or if I want to print something 2 times or 10 times or 100 times, so how can I print with while loop? Let's say I am having while loop and I am having one variable, that is a, and the value of a is 5 because I want to print my name 5 times. So how I can print? I will give while a means if the value of a is something means it would be 1, it would be 2, it would be 3, it would be 5, it will work. If the value of while 0, then it will not work because 0 represent false, 0 equals to false. ठीक है, and 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 1, 2, 3, 4 and any other number is represent true. 1 is represent true. ठीक है, or 5 is represent true or 3 is represent true. Means 0 represent false or other represent true. ठीक है, तो if अगर यहाँ पे 0 होगा, then the loop will never execute or the loop will break. ठीक है, और यहाँ पे अगर 1 होगा तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू होगी और इट विल एग्जीक्यूट. ठीक है, तो स्टार्टिंग से बताता हूँ. लेट्स से आई वांट टू प्रिंट माय नेम 5 टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे मैं व्हाइल दूंगा ए मींस ए विल बी 1 2 3 4 5.
ठीक है, एंड आई कैन प्रिंट माई नेम और आई कैन प्रिंट शुभम, शुभम, and then after I will change the value of a equals to a minus 1. A equals to a minus 1 means जितनी बार ये लूप चलेगा at that time the value of a will be changed to minus 1, minus 1, minus 1 means minus 1 like कि 5, then 5 minus 1 is 4, then 5 minus 1 is 3, then 5 minus 1 is 2, then 2 minus 1 is 1. Like that it will execute 5 4 3 2 1, like that it will execute. ठीक है, and Shubham will be printed 5 times. ठीक है, इसको चला के बताता हूँ कैसे चलता है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, तो शुभम विल बी प्रिंटेड 5 टाइम। तो हाउ शुभम विल बी प्रिंटेड 5 टाइम, लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू 5 यहाँ पे आई। ठीक है, देन वाइल ए मींस वाइल 5, तो 5 इज ट्रू, 5 is true, 5 value is true. If it is 0, then it will not execute. ठीक है, so it will execute. It will go over here and print Shubham one time, then print Shubham one time will be printed. ठीक है, then after a की value a equals to a minus 1, then a equals to 5 minus 1. Now the a equals to 4. ठीक है, now again the loop will execute. ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, a की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 5 नहीं है, a की वैल्यू 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 से शुभम प्रिंट हुआ, अगेन शुभम विल प्रिंट, देन अगेन a इक्वल्स टू a minus 1, देन a इक्वल्स टू 4 minus 1, देन a की वैल्यू इज 3, 4 minus 1 इक्वल्स टू 3, देन हियर a is not 4, a equals to 3, then again Shubham will print, third time Shubham will print and a equals to a minus 1, then a equals to 3 minus 1, 3 minus 1 equals to 2, then again a is not 3, a is equals to 2, then it will again print Shubham, then again a equals to a minus 1, then a equals to 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, then again a equals to 1, not 2, then it will execute for 1 and Shubham will be printed. Last time Shubham will be printed, n equals to a minus 1 means a equals to 1 minus 1, 1 minus 1 equals to 0. Then again if it will go to over here, and again if it will go to over here, then the a value is not 1, a value is 0, and if the a value is 0, then loop will never execute and it will terminate, it will break, and 5 times Shubham will be printed. That is the logic, guys. ये समझ में आया सबको, ये क्लियर है, वाइल लूप क्लियर है सबको? थोड़ा सा कठिन होगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड। किसी को डाउट है इसके अंदर, वाइल लूप के अंदर, हाउ द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटिंग? ठीक है, हाउ द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। ठीक है गाइस, if I can give one over here, right, while true or while false, if I can give false while false, then it will never execute a single time because the while value is false. It will execute only if it is true or not equals to 0. If I give 1 or true, then it will execute infinite time. Infinite time means the Shubham will be printed infinite time, right? We can't calculate that. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रू करके ऐसे प्रिंट करूंगा तो इट विल प्रिंट इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, ठीक है वैष्णवी, आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल। लेट्स से इफ आई वांट टू प्रिंट द नंबर from 10, or if I want to print the number from 1 to 100, or if I want to print the number of 1 to 10, like this is the block. This example is of to execute the block of code again and again. This is the example of the Shubham is example of that code. But now I am giving the example if I want to print the number from 1 to 100 or 1 to 10. Like, so with the help of while loop, how I can print. Let's say I want to print the number 10 times or from 1 to 10. ठीक है, so how I can print? I will initialize I equals to 1 because I want to print the number from 1 to 10. ठीक है, and I can give
here while 10, ठीक है, while 10 means while 10 or while a, let's say I have given a and the value of a is 10, I have given, ठीक है, a की वैल्यू मैंने 10 दे दी और यहाँ पे a की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है. Then if I want to print the numbering, let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 10 times, so I can print a, I can print I, and I can change the value of I equals to I plus 1, I plus 1, ठीक है. So it will execute 10 times, ठीक है, एंड ए की वैल्यू में माइनस कर दूंगा, ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, ठीक है. तो जब ये जीरो होगा, इट विल बी एग्जीक्यूट फॉर 10 9, ए इक्वल्स टू 8 ए माइनस 1 ना, तो इट विल एग्जीक्यूट फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, and after that, after 1, it will call this for 0, a equals to 0, and if the a की वैल्यू is 0, then it will not execute, it will break down, ठीक है. इसे प्रिंट करके बताता हूं मैं, ठीक है, इसे प्रिंट करके बताता हूँ, ठीक है. Oh, just a minute. I have given infinite loop. ब्रेकिंग हो गई है, ठीक है. लेट्स एक्सक्लूड दिस, ठीक है. तो हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 till 10 times it will print, ठीक है. Like this is it will work. If I want to print it 100 times, so I can give it 100 and it will print it 100 times, ठीक है. The numbering of 100 times. So when the value is true, right? When the a value is, while key value is true, then it will execute. If the value is false, then it will not execute. This is the simple game of while loop. If the value is true, then it will execute. If the value is false, then it will never execute. ठीक है? Hope this is clear. Okay. ठीक है. So we'll move forward for loop, guys. ठीक है? While loop हमने कर लिया. हम for loop की तरफ चलते हैं. ठीक है? What is for loop and how we can use this? तो for loop also use to print something multiple times or to execute a block of code 100 times or 200 times or many a times, right? For the same thing. Let's say I'm having a girlfriend. Let's say I'm having a girlfriend and the girlfriend name is Pinky. Let's say, okay? And I just want to write a message 100 times like I love you, Pinky. Okay? Like that. So I'm having message, this message, I love you, Pinky. ठीक है, and I want to print it 100 times. ठीक है, I want to print it 100 times. Like we will do in WhatsApp messages ना. ठीक है, WhatsApp message में हम करते थे या 100 टाइम हमने मैसेज प्रिंट करके भेज दिया. So how we can do that? So we can do with the help of range function and for loop. So how the for loop will work? For I in range, I will and range is 100 times or 10 times, right? जितनी बार भी मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है. And I can print the message, I can print a value or I can print directly this message over here, ठीक है. वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है वो क्या प्रिंट है, ठीक है. तो I can print it 100 times, 10 times, 20 times, whatever will be the range. If the range is 100, then it will print 100 times. If the range is 20, then it will 20 or it will execute this block of code 20 times, ठीक है. Like this I can print 10 times, 20 times or 100 times with the help of this for loop function, with the help of this for loop, ठीक है. तो इन दिस वे विल यूज द फॉर लूप. सो हाउ इट विल वर्क. दिस आई वेरिएबल इज टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है. दिस आई वेरिएबल इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड दिस आई वेरिएबल work to n minus 1. N minus 1 means I equals to 0 and I equals to n minus 1 is I equals to 20 minus 1. 20 minus 1 is 19. So it will execute to 0 to 90. 19. If I print the value of this I, it will print from 0 to 19 because it will go to 0 to n minus 1. N minus 1 means this n, this 20 minus 1. ठीक है.
तो कैसे कैसे काम करेगा ये फॉर लूप? फॉर आई इन रेंज ऑफ 20, सो आई विल गो फ्रॉम 0 टू 19, ठीक है, एंड फ्रॉम 0 टू 90 20 टाइम्स दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूट एंड प्रिंट आई लव यू पिंकी। ठीक है, होप दिस इज क्लियर गाइस, होप दिस इज क्लियर। इसमें कोई डाउट है फॉर लूप में? इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you can type in the chat box, we'll discuss. If I want to print 2 times, 10 times, I can print with the help of this for function. ठीक है, ओके, फॉर लूप सबको क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूँ फॉर लूप का। लेट्स से आई वांट टू प्रिंट सेम थिंग, द नंबर फ्रॉम 1 to 100, so how I can print for I in range of, for I in range of 100, ठीक है, एंड प्रिंट आई। तो हाउ प्रिंट आई? सो आई विल बी फ्रॉम 0 to 99, ठीक है, 0 to 99, the value of I will be from 0 to 99 because it will be execute to n-1, ठीक है। तो अब अगर इसको प्रिंट करूंगा तो इट विल गिव मी फ्रॉम 0 to 99, ठीक है। So this how it works. One major use case of for loop is also this one, ठीक है। Let's say I am having a string called name, this is string k, and in this string मेरे पास एक वैल्यू name, and if I want to print or if I want to iterate the value of n a m e in next line, right? So how I can print for I in k means I value in k, this k, so I value will be n, ठीक है, I value will be a, I value will be m, and I value will be e, ठीक है। So name will be printed in next line with this code. So like this I can use this iteration function and I can print the value of I again and again, ठीक है। We'll use this function in list, right? When we talk about list na, at that time, so we'll use this, ठीक है। So if I want to iterate one list, right, in that list, right, we have some numbers and I want to iterate that list, so I can use for loop at that time. So it is basically used for iteration. So hope this is clear guys, ठीक है, for loop will be clear. If you have any doubt, any question, any query, you can type in the chat box, ठीक है। क्लियर है सबको? फॉर लूप क्लियर है गाइस? फॉर लूप व्हाइल लूप क्लियर है? if it is clear then type CLR, type yes in the chat box. We'll move forward to next session, ठीक है, that is coding round. Okay, okay, so we will move forward to our first question, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये वाली इसके लिंक में शेयर कर देता हूँ एक क्वेश्चन का, ठीक है, तुम्हारे साथ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसका लिंक शेयर कर देता हूँ मैं। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है ये, सिंपल सा, ठीक है। तुम डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड लिखोगे एंड इट विल एग्जीक्यूट, ठीक है, ऑन हैकर रैंक। हैकर रैंक का प्रोग्राम है एंड हैकर रैंक विल हेल्प यू टू गेट स्टार्स लाइक 5 स्टार इन पाइथन, 6 स्टार और 4 स्टार इन पाइथन। लिंक्डइन पे तुम देखते होगे ना, लिंक्डइन पे लिखे होते हैं लोगों के कि आई एम हैविंग 5 स्टार एट हैकर रैंक, आई एम हैविंग 3 स्टार। तो यू कैन अचीव while solving the question, ठीक है। तो इस पूरी वर्कशॉप के अंदर हम 21 days की वर्कशॉप के अंदर अराउंड 100+ हैकर रैंक और हैकर अर्थ के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। विल डू 100+ क्वेश्चंस, ठीक है, लाइक दिस, शॉर्ट, लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑफ हैकर रैंक एंड हैकर अर्थ, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हैकर अर्थ और दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हैकर रैंक, सॉरी, we'll also do the question of hacker earth also, ठीक है। This is the hacker rank, ठीक है। So I have shared a link with you guys. So the question is simple. You just need to print the hello world in the first program and the format is simple. That's it. How the format is? You just need to print hello, then comma, then world.
एंड दिस साइन एंड योर कोड इज एक्सिक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हेलो लिखोगे तुम, कॉमा लगाओगे, फिर वर्ड लिखोगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यू कैन रन द कोड विद दिस बटन एंड इफ द सैंपल टेस्ट केस इज पास देन यू कैन सबमिट द कोड। दैट इज इजी। ठीक है, सब लोग कर पाएंगे ये? ठीक है, हैकर अर्थ और हैकर रैंक पे सब लोग क्वेश्चन कर पाएंगे? ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन गाइस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा साथ में और सब लोग करेंगे भी सही। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल मैं कर रहा हूँ, बाकी सब लोग भी साथ में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ब्रीफ अबाउट द नेक्स्ट सेशन, विल आई विल ब्रीफ अबाउट द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ये वाला जो सेकंड डे का नेक्स्ट सेशन होगा, आई विल ब्रीफ अबाउट। ठीक है, ओके कृष्णा। ठीक है, पहले आज का पढ़ लें अपन, फिर कल का डिस्कस करेंगे। ठीक है, so this is the second, oh sorry, this is the second question guys. I'm sharing a link with you. I'm sharing a link with you all, the link of second question. ठीक है, it might be not easy because the first question is of simple hello world program, but the second question is of some complexity. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का लिंक मैंने शेयर किया चैट में। ठीक है, सबको क्लिक करना है इसके ऊपर एंड यू विल बी गेटिंग अ विंडो लाइक दिस। रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, इट इज टेकिंग सम टाइम। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यू विल बी गेटिंग कुछ तुमको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, सो यू कैन डायरेक्टली इग्नोर दिस, और इफ यू वांट टू राइट द कोड फ्रॉम स्क्रैच तो यू कैन delete this code, right, what is pre-written, and you can start your new coding on this window. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? We have two number, that is a and b, and we just want to take an input from the user, and after that I want to print the sum of two numbers in one line. In second line I want to print the difference of the two number. In that third line I want to print द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, ये एक सिंपल सा कोड है मेरा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको करना है, मैंने चैट में दिया हुआ है कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो हाउ वी कैन डू दैट? सो फर्स्ट आई नीड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, एंड हाउ आई कैन टेक, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो डायरेक्टली इंटीजर इनपुट ले लेंगे हम दो। ठीक है, ए इनपुट एंड बी इक्वल्स टू एंड बी। ठीक है, these are the two inputs। ठीक है, a and b, these are the two number we have took from the user। ठीक है, then in first line I have to print the sum of two numbers। ठीक है, तो first line I will print the sum of two number, print a plus b। ठीक है, in second line I will print the subtraction part of the two number or difference of the two number, a minus b, and in the third line I will print the product of the two number। ठीक है, so this is the simple code, you can do that। ठीक है, and after that we can run this code। ठीक है, so our sample test case is pass। ठीक है, input this, output this, and after that we will submit the code। ठीक है, and our main text case is also pass। ठीक है, so this is a simple code guys। मेरे साथ सब लोग कर रहे हैं? if you are doing with me you can yes type yes in the chat box। if you are not doing with me then please start doing with me guys, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे तो फिर बाद में कब करोगे? ठीक है, ओके, ओके प्रवीण। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन गाइस, वी हैव डन। ठीक है, दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी हैकर रैंक के। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे हम जाने वाले हैं। ठीक है,
सो इफ यू हैव डन दीज टू क्वेश्चन, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मेरे को सबके यस चाहिए चैट बॉक्स में, कौन कौन ने किए हैं अभी, बिकॉज वी हैव अराउंड 20 पीपल इन द चैट एंड आई जस्ट वांट द आंसर फ्रॉम यू गाइस, बिकॉज इफ आई एम टीचिंग आई वांट दैट तुम सबको सबको सारी चीजें समझ में आए और सब लोग मेरे साथ में कोडिंग करें। ऐसा ना हो कि बस मैं हैकर रैंक हैकर तो क्वेश्चन कर रहा हूँ और बस तुम देख के चिल कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब लोग साथ में करेंगे। ठीक है, 10 मिनट हमारे बचे हैं इस सेशन के और 3 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन गाइस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का लिंक मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ, सब लोग खोलेंगे इस क्वेश्चन को। चैट में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, शेयर किया मैंने चैट में थर्ड क्वेश्चन का लिंक। ठीक है, सब लोग ओपन करेंगे इसको। और कल से मैं लिंक शेयर नहीं करूंगा, मैं ये जो शीट है ये तुमको शेयर कर दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर यहाँ पे, तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट और विद द हेल्प ऑफ दिस शीट। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे सब लोग। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन द थर्ड क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन गाइस। सो वी हैव डन टू क्वेश्चन ऑफ हैकर रैंक। योर रैंक विल बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ दिस गाइस। ठीक है, you will be getting 4 star, 5 star or 3 star in Python after this. ठीक है, so what the question is saying, let me explain, right? So we have provided two input, integer a, integer b. We can take an input from the user, or we can use the pre-written code, that is a of int b or int b, or you can write the code from scratch. You can delete the code, whatever it written over here, we can write scratch. ठीक है, from scratch. So we have to take an input from the user, two input, that is a and b, and we have to build a logic like that. We want to print द डिवीजन ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी एंड द ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, दो हमें आउटपुट देने, और फर्स्ट जो आउटपुट होगा वो इंटीजर में होगा और दूसरा जो आउटपुट होगा वो मेरा फ्लोट में होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, जिस टाइम पे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन करी थी कि अगर मैं सिंपल यहाँ पे अगर सिंगल स्लैश लगाऊंगा तो द आंसर विल बी इन फ्लोट वैल्यू। इफ आई गिव द वैल्यू इन दिस पार्ट, सो द आंसर विल बी इन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो आंसर मेरा इंटीजर में आएगा। अगर मैं डबल स्लैश लगाऊंगा तो इंटीजर में आएगा, सिंगल स्लैश लगाऊंगा तो फ्लोट में आएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे पास दो इनपुट है, तो ए मेरे पास एक इनपुट है। ठीक है, मैं इंटीजर में इनपुट ले लूंगा। सब लोग प्रैक्टिस करो कि यार स्क्रैच से कोड लिखूं। ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी वगैरह क्वेश्चन पूछती है तो यू हैव टू राइट द कोड फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो वी हैव टेकन टू इनपुट्स, इनपुट ए एंड इनपुट बी। ठीक है, दो इनपुट मैंने ले चुका हूं और इन दोनों के अंदर मेरे को क्या प्रिंट करना है, पहले में मेरे को इंटीजर प्रिंट करना है। ठीक है, तो आई कैन प्रिंट ए डिवाइड बाई बी, दैट इज इंटीजर, एंड आई कैन प्रिंट ए डिवाइड बाई बी, दैट इज फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो दिस विल बी इंटीजर वैल्यू एंड दिस विल बी द फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो आई कैन रन द कोड एंड आई विल गेट द आंसर। लाइक यहाँ पे 4 को 3 से डिवाइड किया, द आंसर वुड बी 1.333। ठीक है, इंटीजर वैल्यू इज 1, फ्लोट वैल्यू इज 1.33। आई विल सबमिट द कोड एंड द टेस्ट केसेस इज पास। ठीक है, तो हैकर रैंक के अभी हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं गाइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 स्टार आ चुका है। यू माइट बी गेटिंग 1 स्टार। ठीक है, अगर तुमने भी किया होगा तो 1 स्टार तुमको भी आ गया होगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो यू कैन फ्लॉन्ट ऑन लिंक्डइन विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, लिंक्डइन पे होता है ना, फ्लॉन्ट करते हैं लोग, आई एम गेटिंग 1 स्टार एट हैकर रैंक इन पाइथन, आई एम हैविंग 5 स्टार। तो यू कैन फ्लॉन्ट विद द हेल्प ऑफ दिस, लाइक यू कैन डायरेक्टली क्लिक over this icon and you can share on LinkedIn कि I am having 1 star. If you if you clear or if you do about 50 plus problem or 60 problem, you can have 5 star rating at hacker rank. ठीक है, मेरे पास 5 स्टार है मेरी दूसरी आईडी पे। ठीक है, तो 50 प्लस क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे, ठीक है, विद दिस 21 days, तो यू कैन गेट 5 स्टार एट हैकर रैंक। ठीक है, 5 स्टार तुमको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, फोर्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने लिंक चैट में शेयर किया हुआ फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है, सब लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। लूप्स का क्वेश्चन है बेसिकली। लूप्स में अभी तुमको बता चुका हूं कैसे लूप्स काम करते हैं। ठीक है,
कैसे लूप्स काम करते हैं वो मैं चीजें बता चुका हूँ तुमको। ठीक है, तो लूप्स का क्वेश्चन है। लूप के अलावा इसके अंदर एक चीज और इंक्लूड हुई है, वो चीज मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दैट, आई विल एक्सप्लेन दैट। सो द टास्क इज, व्हाट इज द टास्क, व्हाट इज द क्वेश्चन? ठीक है, द प्रोवाइडेड कोड सब रीड द इंटीजर एन। ठीक है, तो आपको एक इंटीजर एन वैल्यू यूजर से लेनी है। ठीक है, इनपुट में लेनी है वो वैल्यू। देन क्या बोल रहा है वो? फॉर ऑल द नॉन नेगेटिव इंटीजर, द नंबर विच इज ग्रेटर देन, द नंबर विच इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब जो नंबर नॉन नेगेटिव है, ठीक है, जो नंबर जीरो से बड़े हैं, ठीक है, उनका हमको क्या प्रिंट करना है? उनका हमको स्क्वायर प्रिंट करना है। स्क्वायर मतलब स्क्वायर क्या होता है? लेट से आई एम हैविंग टू, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर इज टू इंटू टू। ठीक है, दैट इज फोर। लेट से आई एम हैविंग वैल्यू फाइव, द स्क्वायर ऑफ फाइव, तो स्क्वायर ऑफ फाइव इज फाइव इंटू फाइव। ठीक है, दैट इज 25। स्क्वायर ऑफ फाइव इज 25। ठीक है, लेट से आई एम हैविंग वैल्यू सिक्स, सो द स्क्वायर इज सिक्स, इज सिक्स इंटू सिक्स, तो 36। ठीक है, लाइक दैट आई हैव टू प्रिंट, लाइक दैट आई हैव टू प्रिंट। ठीक है, तो क्वेश्चन सबको क्लियर है गाइस? क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? हमको एक नंबर दिया जाएगा, वी हैव टू, हमें एक नंबर दिया जाएगा। लेट से मेरे को एक नंबर दिया है थ्री। ठीक है, तो थ्री अगर मेरे को दिया है, तो थ्री के अंदर कहां से स्टार्ट हो रहा है? थ्री स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वन एंड टू। दीज आर द थ्री नंबर्स एंड आई हैव टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर। ठीक है, लेट से आई एम हैविंग वैल्यू फाइव, तो फाइव में क्या क्या इंक्लूड होगा? जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। These four, these five values, one, two, three, four, five. From zero to four, I have to print the square of this. Print the square of zero square is zero. One square is one. Two square is four. Three square is nine. Four square is 16. Like that, I have to print. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? चैट में यस लिखो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो। और आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन वंस अगेन। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, कैसे तुम्हें सॉल्व करना है, मतलब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब? ठीक है, एक और बार बता देता हूँ। यूजर से इनपुट हम एन लेंगे, एन के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, एन के अंदर लेट से मेरे पास एट आ गया, तो आई हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर फ्रॉम जीरो टू सेवन। ठीक है, एट वैल्यू इज जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, यहां तक इनके सबके स्क्वायर प्रिंट करने में। दिस इज द क्वेश्चन गाइस। ठीक है, ठीक है, बताता हूँ मैं, स्टार्ट करते हैं हम एन से। लेट टू का इनपुट एन फ्रॉम द यूजर। ठीक है, एंड द इनपुट इन द इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में मैंने इनपुट ले लिया एंड आई हैव टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर्स। ठीक है, सो मैंने बताया था फॉर लूप कैसे काम करता है। फॉर लूप कहां से काम करता है? फॉर लूप विल वर्क फ्रॉम, फॉर लूप विल वर्क फ्रॉम जीरो। ठीक है, फॉर लूप कहां से वर्क करता है? जीरो से। आई की वैल्यू कितनी थी? जीरो से, जीरो से कहां तक? एन माइनस वन। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा, लेट से यहाँ पे ये टेन, सो आई विल बी प्रिंटेड फ्रॉम जीरो टू नाइन। ठीक है, जीरो टू नाइन, जीरो टू नाइन। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई हैव टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यू जीरो टू एन माइनस वन। एन की वैल्यू थ्री है एंड आई हैव टू प्रिंट फ्रॉम एन माइनस वन टिल टू। ठीक है, तो कैसे करूंगा? फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है, सो आई की वैल्यू फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन एंड आई हैव टू प्रिंट द स्क्वायर। So how can I can print the square? I can print the square with two method. One method is like I can print with I into I. ठीक है, I into I means the value of I into I, means the value, if the value of I, let's say if the value of I is zero, so print function will be print zero into zero. If the value of I, let's say one, so one into one. If the value of I, let's say two, so two into two. Two into two is four, two का square. Let's say if I value is four, so four into four. ठीक है, 16, फोर का स्क्वायर। लाइक दैट इट विल बी प्रिंट। ठीक है, ठीक है, तो इट विल एग्जीक्यूट फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन, जीरो टू एन माइनस वन, एंड इट विल प्रिंट आई इंटू आई। ठीक है, ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो प्रिंट विद अनदर मैटर, आई विल टेल यू। ठीक है, पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो द टेस्ट केस इज पास। ठीक है, बिकॉज द फर्स्ट इनपुट इज फाइव एंड आवर फंक्शन इज गिविंग। ठीक है, आवर फंक्शन इज गिविंग आउटपुट जीरो, वन, फोर, नाइन एंड 16, लाइक दैट। ठीक है, वी विल सबमिट दिस कोड।
ठीक है, and all the test is passed. I can print like this also. If I want to print the square of something or cube of something, so I can print double into and two. That will be square, that will be cube, that will be 4 times. So if I want to print the square, I can print like this also. Okay. So it will give the same output with the help of this or with the help of I into I. Hope this question is clear, guys. If you have done the coding of this question, you can type yes in the chat box. If you have not done, if you want to explain me one more time, I can explain you. ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि एक बार और एक्सप्लेन करूं तो आई कैन एक्सप्लेन यू गाइस. ठीक है, क्लियर है सब कुछ. होप यू हैव डन दिस क्वेश्चन गाइस. ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ हैकर रैंक. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन था हमारे. 4 क्वेश्चन हम हैकर रैंक पे कर चुके हैं. ठीक है, 21 डेज के अंदर हम अबाउट प्रोबेबली 100 और नॉट मोर देन 100 क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है, इन 21 डेज के अंदर हैकर रैंक के और हैकर के सबके मिला के. सो यू विल बी हैव अराउंड 5 स्टार रेटिंग एट हैकर रैंक. ठीक है, मतलब टिल द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल बी हैविंग 5 स्टार रेटिंग एट हैकर रैंक और हैकर. ठीक है, तो तुम फ्लॉन्ट कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर. ठीक है, जाके वहां पे लिख सकते हो. ठीक है, ओके. तो 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और इटरेशन वाइल लूप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं तुमको. प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक क्वेश्चन हम जो कर चुके हैं इसमें से करेंगे. सो ये सारी की सारी चीजें हम कर चुके हैं. ठीक है, if you have any doubt, any question, query, so you can type in the chat box, right? We will discuss over here because for today we will wind up this session. सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं. अगर आप लोग लिंक्डइन यूज नहीं करते हैं तो लिंक्डइन के ऊपर स्टार्ट करो डालना कि वी हैव लर्न दीज टॉपिक्स. राइट, सारी की सारी चीजें लिंक्डइन के ऊपर डालना स्टार्ट करो. If you want chat gpt prompt of LinkedIn, I will share a chat gpt prompt of LinkedIn, right? So it will give you a content for your LinkedIn profile. ठीक है, आपको कोई कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है. इट विल गिव यू कंटेंट फॉर योर LinkedIn प्रोफाइल. ठीक है, तो चैट में मैंने दिया हुआ है ये. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे पोस्ट लिख सकते हो तुम. ठीक है, चैट जीपीटी तुमको लिख के दे देगा डेली डेली पोस्ट. यू जस्ट हैव टू गिव व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस वन वन डे, राइट? फर्स्ट डे पे तुमने क्या क्या किया है तुम उसको बताओगे, वो तुम्हें पोस्ट लिख के दे देगा. ठीक है, चैट जीपीटी तुमको पोस्ट लिख के दे देगा. अच्छा, गूगल. हाँ, आई विल शेयर अ गूगल कोलैब लिंक विथ यू गाइस. ठीक है, ये वाला गूगल कोलैब का लिंक आई विल शेयर विथ यू गाइस. ठीक है, let me share with you. And if you want a recording of this, like if you have missed something or if you have missed the whole day, right? Or if you have missed some 5 minute or 10 minutes video, so you can go on our YouTube channel. ठीक है, आप हमारे YouTube चैनल पे जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, YouTube चैनल पे you will find our all the recorded lectures. ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पे तुमको सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे. ठीक है, तो इफ यू वांट लाइक 1 hour ऑफ पाइथन वेबिनार, सो लाइक दैट काइंड ऑफ वीडियो यू कैन चेक ओवर हियर. ठीक है, तो कोई भी चीज अगर मिस होती है तो यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग ओवर देयर. यू विल फाइंड द रिकॉर्डिंग. ठीक है, इसका लिंक मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ. ठीक है, तो यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस. ठीक है, तुम इसकी कॉपी बना लेना खुद के पास क्योंकि शायद तुम इसमें एडिट ना कर पाओ. ठीक है, कॉपी इन ड्राइव, सेव एज इन ड्राइव, लाइक दैट you can make a copy of this. ठीक है, लेट मी शेयर विथ यू गाइस. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछो, विल डिस्कस. ठीक है, रेस्ट्रिक्ट एडिटर कैन चेंज द प्रोफिशिएंसी एडिटर एंड नो लोकेशन.
ठीक है, तो व्यूअर की परमिशन दी है मैंने इसकी। ठीक है, तो यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस दिस नोटबुक गाइस। ठीक है, चेंज नहीं कर पाओगे इसमें, बट यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस। ठीक है, गूगल कोलैब का लिंक मैंने शेयर कर दिया चैट में, फिर यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ दिस। करेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बैक टू बैक नीचे प्रिंट करके हैकर रहेंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, बैक टू बैक नीचे 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 प्रिंट करते कैसे, मतलब कैसे क्या बोल रहे हो आदित्य? हैकर रैंक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन में बोल रहे हो तुम? चार क्वेश्चन किए हैं हमने, कौन से क्वेश्चन की बोल रहे हो तुम? वी हैव डन अबाउट 4 क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना है, बैक टू बैक नीचे प्रिंट करते जाओ। हाँ, आप तुम प्रिंट करोगे नीचे एक के नीचे एक, तो इट विल प्रिंट। ठीक है, इट विल प्रिंट लाइक दिस। हर एक क्वेश्चन के लिए स्पेस होगा कि एक शीट के नीचे टाइप करते जाना है। नहीं, हैकर रैंक के क्वेश्चन के लिए तो मैंने लिंक दिया हुआ है, जैसे तुम लिंक पे टच करोगे ना, तो यू विल बी गेटिंग अ विंडो लाइक दिस। और इसके क्वेश्चन तुम यहीं पे ही सॉल्व करना है, इसी वेबसाइट पे ही सॉल्व करना है। तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा पूरा का पूरा है, इसका सोल्यूशन मेरे को यहाँ देना है। ठीक है, इसका लिंक मैंने दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन अलग अलग। ठीक है, लेट से मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं पहले क्वेश्चन के लिंक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मेरे पास ऐसी विंडो आएगी, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा यहाँ पे प्रिंट करके, यहाँ पे सबमिट कर दूंगा इसको, नीचे रन कोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को मेरी प्रोफाइल बन जाएगी, और उस प्रोफाइल की हेल्प से मैं आगे भी क्वेश्चन करूंगा सारे। तो इसके अंदर तो कोई मतलब एक के नीचे शून्य क्वेश्चन एट अ टाइम। नहीं, यू कैन सिंगल क्वेश्चन एट अ टाइम मीन्स यू कैन डू एज मेनी क्वेश्चन यू वांट इन हैकर रैंक। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, पाइथन के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट मैंने जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन निकाल के मैं करवा रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, एंड दीज आर द होमवर्क क्वेश्चन गाइस, होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, तो दीज टू आर द होमवर्क क्वेश्चन, तुम करने की कोशिश करो इनको। इफ यू फाउंड समथिंग राइट, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टू क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। ठीक है, डाउट सेशन में हम क्लियर कर लेंगे। तो ये दोनों के दोनों होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे गाइस, दोनों के दोनों होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी मैं शेयर कर देता हूँ इनको होमवर्क क्वेश्चन को। ठीक है, तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन करना है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन होमवर्क होमवर्क के लिए हैं ये। अगर कल तुमसे नहीं होते तो विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, विल डिस्कस इन द क्लास। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, डाउट है, चैट में बताओ, विल डिस्कस। फुल स्टैक जावा या पाइथन दोनों में से एक से ज्यादा स्कोर, फुल स्टैक जावा या पाइथन? इफ यू आर गोइंग फॉर फुल स्टैक गाइस, सो यू कैन गो विथ जावा। राइट, ठीक है, पाइथन को मैं नहीं लूंगा, क्योंकि पाइथन इज बेसिकली वी आर यूजिंग राइट फॉर मशीन लर्निंग, फॉर डेटा एनालिसिस इन अ वाइड रेंज। ठीक है,